Good morning, everyone. Uh, Today we are going to learn the music notation. It's a very simple way. Everyone must to understand what is the music notation. So let's go. We're going to learn this music notation. I have a piece of paper that I have written this table, so you can find out, and as well as you will have a screen also the same note, so you can see the notes on your screen. So this is the first symbol which I have written this year. This name is a treble clef. You can say treble clef or G clef. So that is the main important thing. Uh, there will be a 5 lines. That is a main line that music has. So 1, 2, 3, 4, 5 lines is there. So in 5 line, we're going to divide it into two pieces of this line. So first of all, we are going to learn. So I have draw the two lines. Okay, line notes and space notes. You can find out line notes and space notes. So the line notes will be जो लाइन के ऊपर आपको नोट्स मिलेगा, एंड द स्पेस नोट्स मीन्स आपको दोनों नोट्स के जो स्पेस है उसी उसी स्पेस में आपको जो नोट्स आएगा. फॉर एग्जांपल यू कैन सी द फर्स्ट नोट्स. सो मैंने नीचे थोड़ा सा डार्ट लगा के यहाँ पर मैंने आपको लगाया फर्स्ट नोट सी, एंड सेकेंड लाइन के नीचे डी, और उसके बाद लाइन के ऊपर ई, और लाइन के बीच में एफ, और लाइन के ऊपर जी, लाइन के बीच में ए. सो यू कैन फाइंड आउट द होल द पूरा लाइन को आप देख सकते हैं. पर लाइन जो स्पेस है तो सिंपल याद रखना, आपको 1, 2, 3, 4, 5. सो 5 लाइन पर आपको जो नोट आएगा उस नोट्स को थोड़ा सा याद रखना. दैट मीन्स ई, जी, बी, डी, एफ. So simple you can every good boys does fine. So you can say every good boy does fine. So that is the main important the line notes. So अगर आपको लाइन आ रहा है तो फर्स्ट लाइन आपको E नीचे से, एंड सेकेंड लाइन G. ओके, एवरी गुड. थर्ड लाइन बॉय, एंड फोर्थ लाइन डस D, एंड फिफ्थ लाइन विल बी आपको या फाइन. सो यू कैन ईजिली याद कर सकते हैं. तो एवरी गुड बॉय डस फाइन. सो आपको 5 लाइन की जो ऊपर जो नोट्स आएगा तो आपको मालूम हो गया. एंड सेकेंड 5 नोट्स के जो बीच में स्पेस में जो आते हैं उस लाइन को आप सिंपल याद कर सकते हैं. फेस, अपना फेस याद रखना, FACE. जो फर्स्ट एंड सेकेंड लाइन इन दोनों के बीच में जो नोट्स आएगा आपको F, एंड सेकेंड एंड थर्ड के बीच में A, एंड थर्ड एंड फोर्थ के बीच में C, एंड फोर्थ एंड फिफ्थ के बीच में आपको E. सो सिंपल याद कर सकते हैं फेस. So that is main important in this notation paper. So first line notes याद रखना. line notes will be 5 and space notes will be 1, 2, 3, 4. Okay, so 5 line notes. How you can understand? Every good boy does fine. You got it? So first we will see every good boy does fine. So there will be 5 notes, and the space notes आपको face. So just simply you can memorize that face, FACE, face. So this is main notes. In that notes we can have a music notation for the keyboard and guitar. For every western music you will have the same pattern. Okay, so today I'm going to teach you. If you have a keyboard, piano, so you can go for that. So I'm going to teach you so that you can play well and learn well and know it well. So first there will be a keys. You can see that 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3. There will be a set of black keys and the white keys. So the western music start होते हैं from C to C. Okay, so the alphabetic A, B, C, D, E, F, G. Okay, then again it will go. But in music we have to remember A to G. So that means that is alphabetic A, B, C, D, E, F, G.
But when you come to western music notation, so the first note will be आपको C. So A B will go, आपको पीछे चल जाएगा. So we will counting C, D, E, F, G, G के बाद A B. Okay, so the first note C, how you can find out from this keyboard. So there will be 2 black color keys and 3 black color keys. Wherever you are seeing 2 black color keys, before the key, that will be C. I'm playing before the 2 black keys, the white key will be C. Okay, I'm playing the 2 black color keys here. उसका जो पहला की C. And जहाँ भी आपको 3 black color keys you're seeing, so before the 3 black color keys, that will be a F. Okay, so याद रखना 2 black color keys before will be C and 3 black color keys before F. So that is the main important notes. So you can finally easily you can go for that. So if you know the C, automatically you can play the C, D, E, F, G, A, B, the next note C. So this is the main notes you have to understand. So where is the C? Wherever 2 black color keys, you can find out from this keyboard. So here 2 black color keys, so C will be here. So there is a 2 black color keys, those C will be here. And here 2 black color keys, C will be here. And here 2 black color keys, so C is there. So here 2 black color keys, so C you can find out here. So like that, F also you can go for that. So main C, the middle C will be the third C. That means first 2 black color keys C, the first C and second C and third C. इसको बोलते हैं middle C. So हम शुरू करेंगे middle C से. Okay, so C, D, E, F, G, A, B, C. आ गया आपको C note. So that is main important western notes. So आपको बजा सकते हैं C, D, E, F, G, A, B, C. Again repeat with me. C, D, E, F, G, A, B, C. So you got the notes. And जो ऊपर black color keys दिख रहे हैं इसको बोलते हैं sharp note. So there will be a 5 fingers, 1, 2, 3, 4, 5, and you can find out easily 5 sharp notes. So that will be a C sharp, D sharp, and F sharp, G sharp, A sharp. For example, I am telling the all notes. C के बाद आपको आएगा C sharp, again white color की D. So D इसके ऊपर जो black color की D sharp, E and F के बीच में आपको you don't have sharp note. So E के बाद you have to say and you have to play F. Okay, so E and F के बीच में कोई black color keys नहीं, इसलिए no sharp है. So again C sharp, D sharp, E, F के बाद F sharp, G sharp, A sharp, B, C. So this is the main notes. So आपको आ गया वापस. I'm repeating C sharp, D sharp, E, F sharp, G sharp, A sharp, B, C. Okay, you got it? So this is the main western music starts from this middle C. So अगर आपको ये चीज़ याद है तो बिल्कुल you can play scales. So first आपको finger pattern आपको मैं देता हूँ. जो first finger आपको 1 right hand 1 2 3 4 5. Okay, so right hand counting 1 2 3 4 5. So this is the right hand finger, and left hand you can say same pattern 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1, and right hand 1 2 3 4 5. Okay, so got it? So 5 4 3 2 1 1 2 3 4 5. So this is the right hand pattern and left hand pattern. So now we are going to practice from the right hand. First you will play 1 2 3, and again you will play 1 2 3 4 5. So I'm just showing that how you have to play the scale. 1 2 3, again 1 2 3 4
repeating 1 2 3 वापस 1 2 3 4 5 you have to start from C so 1 2 3 1 2 3 4 5 आ गया आपको समझ में so you have to practice this entire 1 2 3 1 2 3 4 5 so if you are going for the notation C D E F G A B C okay so practice well and तो आप लोग गिटार भी प्रैक्टिस कर सकते हैं okay so I'm just giving the notes so how you can play the guitar okay so first of all so you need to understand what is the main things which guitar has okay so first one will be the strings you must understand the strings हमेशा याद रखना counting you have to count from down to up so 1 2 3 4 5 6 there will be 6 strings so first number 1 नीचे से 1 2 3 4 5 6 ओके 6 स्ट्रिंग्स आपको यहाँ पर मिलेगा और उसके बाद जो बीच बीच में आपको लाइन आ रहा है इसको बोलते हैं फ्रेड लाइन ओके सो फ्रेड लाइन अब देखना इसको फ्रेड लाइन ये वाला फ्रेड लाइन ये फ्रेड लाइन पर दो फ्रेड लाइन के बीच में जो जगह है इसको बोलते हैं फ्रेड बस याद रखना आपको 3 मेन इंपॉर्टेंट थिंग्स if you want to learn guitar so first of all strings fret and finger so mostly you used to play from left okay so right hand will be a strumming pattern okay याद रखना so strings आपको जो first string will be down it's not from up okay so हमेशा याद रखना down so you will play from down 1 2 3 4 5 6 एंड लेफ्ट हैंड तो आपको फिंगर्स काउंटिंग तो हम नहीं काउंट करना ओके 1 2 3 4 ये 4 फिंगर आपको ओके 1 2 3 4 ये 4 फिंगर बजाएंगे तब आपको ग्रिप के लिए लगेगा सो द काउंटिंग विल बी 1 2 3 4 गिटार स्टूडेंट्स जस्ट लिसन केयरफुली एंड द फ्रेट फर्स्ट फिंगर हम यूज़ करेंगे सेकेंड फिंगर यूज़ करेंगे थर्ड फ्रेट हम वी विल प्ले and we'll use third finger and fourth fret for the fourth finger okay so today I'm just going to say the names of the strings probably if you forgot the name so repeating again the first string so you can have the sound so this will be E so E sound first will be E and second string जो है इसके जो नाम है B so first one will be E and second one will be B okay and third just string will be G okay the first one E second one B and third one G okay and fourth one D okay so fourth one will be D so again I'm repeating from first okay the first one E second one B third one G and fourth one D and fifth one आपको A so बोलना fifth one A okay and sixth one E so first and sixth will be the same note E okay so 5 and 6 sorry 1 and 6 will be same note E okay so I'm repeating 1 will be E second will be B third will be G fourth will be D fifth will be A and sixth will be E so you got it so this is the main string sound that guitar has the first notes E so you can ऐसा याद कर सकते हैं every good boys girls dancing at evening okay I'm repeating every boys girls dancing at evening so every E boys B girls G dancing D at A evening E so you can easily understand every boys girls dancing at evening so strings will be आपको easy then next आपको notes so before I told that so every music the western music starts from C
So if you are counting C, C sharp, D, D sharp, E, F, F sharp, G, G sharp, A sharp, B, again C. So you can see on the screen also. So अभी जो first note है ये कहाँ से शुरू हो रहा है? E. So we have to count from E, not C. So E से हम count करेंगे. So first आपको उसको बोलते हैं open string. Open string मतलब मैं कहीं नहीं पकड़ा हूँ, just I'm playing openly. Okay, so the first notes, first string will be E. Okay, so E के बाद मेरा जो first finger and first fret, if I'm pressing that, the sound will be changing. Can you hear me? Okay, so the sound will be changing. So the first note openly I'm playing E, and E के बाद क्या notes आएगा आपको? F. Okay, you got it? F, and F के बाद I'm pressing second note, second fret, F sharp, and again I'm playing third note, G, G के बाद G sharp, A sharp, B, B के बाद क्या आएगा? C, और C sharp, D, D sharp, E. Okay, when you are playing keyboard, so we are starting from C to C. As the same pattern, if you are starting from guitar, so playing guitar, so we are starting from E to till E. Okay, so again I'm saying E, F, F sharp, G, G sharp, A sharp, B, C, C sharp, D, D sharp, E. आगे आपका फर्स्ट स्ट्रिंग्स का नोट्स. सो इसके अंदर अभी प्रैक्टिस करें वापस. E, F sharp, G sharp, A sharp, B, C sharp, D sharp, E. ओके, देन सेकेंड नोट्स आपको B. सो B के बाद आपको B के बाद क्या शुरू होगा? B के बाद C. सो C sharp, D sharp, E, F sharp, G sharp, A sharp, B. Okay, so all the notes will be go according to the sound of this string. Okay, so ये चीज़ याद रखना. तो आपको प्रैक्टिस के लिए आज मैं आपको थोड़ा सा फिंगर पैटर्न बताता हूँ. तो उस फिंगर पैटर्न को इसलिए बजा सकते हैं. सो आपको लेफ्ट हैंड में सो हम ऊपर से बजाएंगे. काउंटिंग हमेशा नीचे से बजाएंगे. व्हेन यू आर प्लेइंग, सो हम ऊपर से नीचे हम प्ले करेंगे. सो ओके, फॉर द फिंगर पैटर्न आई एम जस्ट गोइंग टू गिव यू 1. Okay, 0 open, 1, 3, open, first finger, third finger, and जो fifth string, open, second finger, third finger, okay, fifth and fourth string, open, second finger, third finger, and third G note, open, second finger, and B second note, open, first finger, third finger, और जो सबसे लास्ट नीचे वाला open, first finger, third finger. Again I'm repeating. ऊपर से बजाएंगे. Last note, last string, open, first finger, आपको third finger, और उसके नीचे वाला string, open, second string, third string, sorry second finger, third finger, और उसके नीचे वाला string, open, सेकेंड फिंगर, थर्ड फिंगर, और उसके नीचे वाला सेकेंड थर्ड स्ट्रिंग आपको बजाएंगे. ओपन, सिर्फ आप सेकेंड स्ट्रिंग बजाएंगे, ओके, और कुछ नहीं. और उसके नीचे ओपन, फर्स्ट फिंगर, थर्ड फिंगर, ओपन, फर्स्ट फिंगर, थर्ड फिंगर.